minutes past 2 minutes past 6:30. तो अभी मैं शेयर करना शुरू कर देता हूँ एंड लेट अस स्टार्ट द वेबिनार, जिससे कल की तरह 40-45 मिनट्स में ये मैं खत्म कर दूं, क्योंकि आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दे आर नॉट वेरी मच लॉन्ग, दे आर जस्ट ओनली IMT, दैट इज द सेकेंड ग्रुप एंड दैट वाज क्या हो गया? Probably my screen is gone. अच्छा आ गई. हाँ. So IMT, as I told you, this is the acronym for Information, Media and Technology. और सेकेंड मॉड्यूल जो है दैट इज फ्लिप्स. तो अभी हम IMT से शुरू करते हैं. लिटरेसी स्किल्स में आते हैं ये तीनों के तीनों. IMT, that is information. Now what exactly is the information literacy? You see, आप देखते हैं ABP न्यूज पे भी आता है वेरीफाइड, मोर और लेस एवरी डे सास बहू साजिश में आता है. और आप ये मत समझिए कि मैं टोटली डेडिकेटेड हूँ प्रोफेशन. आई एम 100% नेक डेप्थ, आई एम नेक डीप इनटू प्रोफेशनल ट्रेनिंग. 18 years प्रिंसिपलशिप के बाद 10 years आई एम इनटू प्रोफेशनल ट्रेनिंग. लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं छोड़ी. बुक्स भी पढ़ता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, टीवी भी देखता हूँ. 7:30 बजे से सीरियल शुरू होते हैं वो भी देखता हूँ. 2, 4, 5, 10 मिनट न्यूज भी देखता हूँ. वो गाली गलौज वाले प्रोग्राम्स आते हैं. दिस इज इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्ट एंड फिक्शन, ये तो आपको देखना पड़ेगा. नाउ द थिंग इज देयर, द पीपल आर वेरी मच happy to share some videos that are religion based, caste based, or some statement about India क्या करेगा क्या नहीं करेगा. आप मुझसे पूछिए कि शर्मा जी आप हैं कौन. मैं आपसे पूछूं, मैं आज तक इस चीज का जवाब नहीं दे पाया. Who are you? If I say Ajay Sharma, that is your name. I am a teacher, that is your profession. I am a trainer, that is your occupation. आप कौन है? Who are you? आइडेंटिटी तो है ही नहीं. So they are all the sum total of all the information which constitutes Ajay Sharma. इसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, try to find out whether it is a fact or a fiction. और ये चीज करने के लिए there is a 5-step approach, very much feasible and very much practical. पहले डिफाइन करिए, जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे, tell them what is the definition of information literacy. You see, हम लोग भी जैसे बोलते हैं कि you might be educated but not literate. Literacy means we know the information, we know how to interpret, we know how to read the information, how to absorb the information. That depends upon our mindset. मेरा नेगेटिव माइंडसेट है तो मेरे को नेगेटिव न्यूज अच्छी लगेंगी, नेगेटिव इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी. मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है तो मैं अभी व्हाट्सएप में भी कितने आते हैं, इंडिपेंडेंस डे में इधर का उधर उधर का उधर. अरे कोई अपनी जेन्युइन, किसी ने लिखा फ्रीडम के बारे में, क्या है. कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था व्हाट्सएप में, दैट विल एग्जिस्ट इन सितंबर इशू, विच इज टोटली डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग. ट्रेनिंग है क्या, क्यों जरूरी है. तो दीपा जी, आपके घर में रोज झाड़ू लगती होगी, पोंछा लगता होगा, एंड डू यू थिंक सो कि इट इज क्लीन फॉरएवर? Dust is always there. Continuous. Dust is Continuous. always there. It is a continuous process, which means daily you have to do. And same is thing about training. If you are trained today, do you think so for lifetime you are trained? Keep on repeating the information. Yes, मैं आपको- updating as well. So it has to be repeated on the regular basis. I am not saying daily, लेकिन I will send you the link to my YouTube channel, which is having only webinars and workshop videos. देखिए जौन सा आपको समझ में आए. 15 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. 15 मिनट्स देखिए, स्टॉप इट, थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या देखी, 15 मिनट की इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास. देन नाउ शो एग्जांपल्स.
This is, I am telling you about a student. Show example which are trustworthy and untrustworthy. अभी इंडिया और रशिया के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है. Do does anybody know about it? What is that competition? That competition is who will reach first on the south pole of moon. Simple. So is it trustworthy or untrustworthy? Yes. Daily basis pe the news is coming. Now define what makes a source trustworthy. Next is efficiency and critically access and evaluation of information. Efficiently and critically assess, not access. Assess and evaluation of information. Think about the positive points, think about the negative points, see the weightage, and then decide. Use how this information can be accurately and used and creatively used for resolving issues or problems. Manage the flow of information from a wide variety of sources. जब भी मैं कोई ये वेबिनार करता हूं तो इसके लिए पावर पॉइंट बनाना होता है. पावर पॉइंट बनाने से पहले मेरे को कम से कम 3 weeks रिसर्च. माय ओल्ड फाइल्स जो मेरे प्रिंसिपलशिप में, टीचरशिप में जो एक्सपीरियंस था मेरा, आई यूज टू राइट. वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके सम देम अप एंड देन मेक पावर पॉइंट, एंड व्हेन आई एम रेडी देन आई स्टार्ट एडवर्टाइजिंग. मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज. गूगल सर्च करना होता है, कुछ रिसर्च पेपर्स देखने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है, टाइपिंग करनी पड़ती है. Number of things are there, and then I apply. This is application what I am talking about. So this is about information. Now the media आप क्या बोलते हैं, trustworthy or untrustworthy? 95% untrustworthy, because most of the times the statements made by the political leaders are also unverified, because they take one sentence out of total presentation. जो भी किसी ने बोला उसमें से एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस निकाल लिया और उसने ये बोला, और उसके ऊपर डिबेट शुरू, उसके ऊपर हाय तौबा शुरू, उसके ऊपर रेजिग्नेशन पूछना शुरू, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. सो मीडिया लिटरेसी मींस द एबिलिटी टू एक्सेस, एनालाइज. जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, सिमिलरली एनालाइज, evaluate, then create. And once you are satisfied that this is trustworthy, then only communicate. Otherwise, मैं तो जनरली इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एनालिसिस करूं, इवैल्यूएशन करूं, देन क्रिएट करूं, एंड देन why should I bother about all these things? Information. अब आप देखिए ना, पढ़े लिखों के ग्रुप में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखों के ग्रुप, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ट्रेनर्स, एजुकेटर्स, अब ये एक पोस्ट डाल रहे हैं, तनिष्क सेलिब्रेटिंग. कोई भी कितनी बड़ी कंपनी हो जाए, तनिष्क इट बिलोंग्स टू टाटाज. और रतन टाटा की एक खूबी है, जो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया नहीं बन पाए, और वो क्या है कि अगर कोई गलती से भी फौजी उनके किसी होटल में पहुंच जाए, not a single rupee they charge, and all services equivalent to the paid services he provides, whether it is a soldier or a general, major general, lieutenant general, कोई भी हो, फौजी होना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस से होना चाहिए, प्रोटेक्टिव फोर्सेस से, not only defense, protective forces, BSF, ITBP, किसी से भी, even police people, और इसी वजह से वो नंबर 1 नहीं बन पाए. Now, help your students to understand what exactly is media literacy. They help to analyze media and understand the potential issues that can arise when using digital tools.
डिजिटल डिजिटल सिटीजनशिप के ऊपर भी कई बहुत सारे स्कूल्स में अभी प्रोग्राम्स चल रहे हैं. They are working on them and they are implementing that digital literacy or digital citizenship programs in their schools. That is, incorporate media literacy as a small piece in their digital citizenship. ये media literacy. और most important इसमें है the use of social media and what is cyber bullying. अभी तो साइबर ब्लैकमेलिंग भी हो रहा है. मेरे पास कई I'm rather sorry to say कि some of the young people give me friendship. अभी नहीं, पिछले 5-7 साल से फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं. भाई, you are 21, 22, 25, different profession, different occupation. Why should I? मेरे फेसबुक ग्रुप में भी there are more than 4,500 members, friends, and most of them, 99% of them are related to education. Either they are teachers, trainers, educators, or some service providers who are related to school education. Who are related to school education. Now, the next thing in this is cyberbullying. अब cyberbullying क्या होता है? Stalking. Keeping on giving the messages. The person gets irritated. तो इसको भी stop करना होगा हमको. Next, about technology. IMT में T is technology. Effective use of technology to communicate. एक्सेस, कलेक्ट, मैनेज, इंटीग्रेट एंड इवेंट. अभी देखिए चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. एंड देयर आर a number of experts already working on spreading the word about chat gpt and IT. Oh sorry, AI, artificial intelligence. Artificial intelligence आज से नहीं शुरू हुआ है. It is just only bringing the thing to the fore in front of you people. अदरवाइज गूगल सर्च में आप लिखिए स्पोर्ट्स शूज लिखिए, बहुत सारे आ जाएंगे. ये जो गूगल सर्च इंजन में आपने स्पोर्ट्स शूज लिखा है, दिस इज टेकन अप बाय ए नंबर ऑफ कंपनीज. अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, एवरीबॉडी टेक्स अप योर नंबर और योर मेल आईडी और योर गूगल इंजन. एनीथिंग इज देयर विद them. That is artificial intelligence to gather the data. And then next day you open your WhatsApp, you open your Facebook, you open your mail ID, there will be number of advertisement in front of you regarding sports shoes. That is artificial intelligence. Now endeavor to predict future needs. यही मैंने अभी आपको बात बोली, artificial intelligence. That is use of technology to solve the problems and innovatively create solutions. They get your problem that you are looking for a sports shoe and then they give you the solution. Nike ka 30,000 और Adidas 32,000. है क्या फर्क? Comfort. There is no comfort. 32,000 के शू में अगर जूते के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा कंकड़ आ जाए तो ऑल कंफर्ट इज गॉन. और एक 500 रुपए का आप शूज ले लीजिए, रनिंग शूज. बाटा के तो हम लोगों ने, आप लोगों ने स्कूल टाइम में पहने हैं, जो हम चौक से उसको वाइट करते थे. Then build and share knowledge. Improve and enhance learning in all subject areas and experience. जैसे मैं करता हूं अभी, मेरी सितंबर का शेड्यूल बिल्कुल तैयार है, फुल सितंबर. Every 6 days there will be 6 webinars. One very important will be coming up is report card and comments. रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, कैसे बनाना चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए, कैसे बनाना चाहिए,
और फिर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कमेंट्स, जनरल कमेंट, बच्चों को हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करना है. So that way we will be doing it. Taming the temper. टेम्पर लूज कर देते हैं बच्चे, और बच्चे क्या बड़े ही लूज कर देते हैं बुढ़ापे में. 60 के ऊपर, मैं 62 का हूं, मगर मेरा टेम्पर जो है बड़ा सॉलिड है. इट इज नॉट लूज. कभी कोई गलती हो गई, गए, अपने आप सुधार दिया. सारी जिंदगी तो गुस्सा किया नहीं, अब गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ेगा. बट शेयर योर नॉलेज, improve and enhance, apply technology and critical thinking to real world situation, real world experience. Then develop. Changing technologies आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी. एंड देन यूज, दैट इज लर्निंग स्टाइल बच्चों का क्या है. इस पे भी मेरा वेबिनार है. अभी नहीं है, पहले हो चुके, कई बार हो चुका है. What is, unless and until you know the learning style of your students, how do you modify your own teaching strategy? जिससे कि 40 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट्स more than 60%, everybody more than 60%, because your teaching style or teaching strategy you are adopting to meet the needs of learner. Different type of learning styles, so different type of teaching also. That way we work. Flexibility, that is flips. अब third module आ रहा है, flips. Flexibility means you have got a fixed information. अब एक information आप बताइए कि everybody knows there are 24 hours in a day. एक हिंदू सिस्टम के और इंडियन सिस्टम के हिसाब से वो कहते हैं एक घड़ी. ये घड़ी कितने मिनट्स की होती है? मैं बता देता हूं आपको, वी विल नॉट वेस्ट टाइम. एक घड़ी होती है 24 मिनट्स. दिन का प्रथम प्रहर सवेरे 3:30 से लेके 5:30 तक होता है. 5 घड़ी का हो गया, इसका मतलब आप लगा लो हिसाब. 24 मिनट इंटू 5, 120 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60, 2 आवर्स. You have to be flexible to adopt to new information, understand the difference in the views that may impact your decision. Some of the teachers who are not very good in teaching don't do they do have the best of the knowledge about their subject, but very low knowledge about how to deliver the information about the subject or the topic. What will be happening? The teacher's views will be changing to such a statement. This is 6th A is a very rude class, very indisciplined. Think about, you should be flexible. Think about your presentation, your delivery system. Mathematics की क्लास में chaos होना चाहिए, but if the teacher is careful, कहीं भी नहीं होता. Because the system of delivery is that much impactful कि हर बच्चा मैग्नेट की तरह ब्लैक बोर्ड से सर से चिपका रहेगा. Even if it is last period of the day, 8th period, सब लोगों को घर जाने की जल्दी है. सब लोगों को घर जाने की जल्दी है. And everybody might have been waiting for the bell to ring. लेकिन ये मैथमेटिक्स क्लास जो है, ये तो बैठे हुए हैं बिल्कुल चिपके हुए ब्लैक बोर्ड के साथ and trying to understand. Letting go, control and adapting to the decisions you may not always agree. देखिए एक बात बताऊं, कल भी मैंने शायद एग्जाम्पल दिया था, नहीं दिया था तो अब सुने कि वीसे एक बच्चा बचपन में अपने पेरेंट्स के पास आता है and then they tell, Mama, my teacher taught me the sun rises in the east. Social science teacher. My science teacher says the sun is stationary.
Now you tell me, science teacher is true or social science teacher is true? Sun is not rotating, sun is not revolving, sun is stationary. And science, social science teacher is saying sun rises in the east and the parents are in a fix. How to explain? They immediately go for the WhatsApp. टीचर को लिखते हैं, सर ये कंट्रोवर्सी क्या कर दिया आपने? कि नहीं मैम, साइंस के टीचर बोलते हैं, सोशल साइंस के भी बोलते हैं, राइट? Because Earth is moving towards the sun, revolving on its axis, and as we move towards the sun, we see the sun coming up. Sun is not coming up. We are going down. So that is a comparative term. So letting go of the control and adapting to decisions. You may not always agree. Sun is stationary, sun rises in the east. Both are correct, but it will be very much difficult for 21st century skills to teach to the middle schoolers, क्योंकि flexibility उनके अंदर थोड़ी कम होती है 6th 7th 8th class में. And that is why you have to be flexible to take on for their positive development. जो कह रहा है बच्चा, सुनिए, एनालाइज करिए, डिसाइड करिए, and then come up with the solution. However, if you approach flexibility in relation to other skills like collaboration, creativity, critical thinking, ये सब they are very much easy to teach or to tell the students, train the students to adapt to these skills. How to collaborate, how to create, how to critically think. A number of things are there. You will find, but the thing is that first you have to take care of these things: collaboration, creative thinking, creativity, critical thinking, everything. You must take care of them. You must adapt to them. And then only you will be able to pass it on to the next generation. Which means you have to leave your ego outside. I know everything. I am the boss. I am the master of the class. Leave it. अभी मैंने सन का आपको एग्जाम्पल दिया. Leave your ego outside the classroom and be open to the ideas and different approaches to the problems shared by the students. Right? Then listen to what the ideas are there from your students, from your subordinates. ग्रुप डी स्टाफ भी आपको कभी आइडिया दे सकता है. एक सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के लिए निकोटेक्स का एक एडवर्टाइजमेंट आता है. दैट सेम थिंग इज अबाउट ट्रेनिंग आल्सो. We know that it will not happen in one day, but one day it will happen. You may not become master of each thing, everything, but you may master everything one day, provided you continuously keep on training yourself. और दीपा जी ने मेरे को एक अच्छी बात बोली, इवन आई शेयर विद यू पीपल ऑल्सो, बिकॉज यू हैव been attending these webinars for a long time. There are a number of participants over here. 7, 8 webinars they have added. Everybody is having these recordings. Share it with your colleagues, your friends, your principal. If you are principal, then your teachers. And not once, keep the 2 periods of the last working day of a week, that means Saturday, 2 periods, that is 80 minutes. कोई भी मेरी वेबिनार की ट्रेनिंग 60 मिनट से ज्यादा नहीं है. होगी 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट. शो देम दैट. लेकिन उसको शो करने से पहले एज ए प्रिंसिपल प्रिपेयर अ असेसमेंट शीट कि इस वेबिनार में ये चीजें आपको खुद मास्टरी होनी चाहिए. फर्स्ट यू सी ओवर देयर, राइट डाउन मेन पॉइंट्स, उसके ऊपर क्वेश्चनेयर बनाइए और फोटोकॉपी कर लीजिए.
All right. After showing that, give them worksheets, every teacher. Bring them back by Wednesday next week. And here is the recording. जो देखना चाहता है, go to the library or computer IT room, see over there, answer them, and come back with your answer sheet. We have got a limited fund of 5 lakh rupees for this year 2023-24, and we have to go for public gathering to enhance our admissions. Come up with the ideas how we should go for spending this money to attract more admissions. ये भी मेरा webinar है. Make your school admission magnet. It is there. But be flexible means listen to what ideas can come up. Write down the idea, write down a brief, and give it. So this means flexibility means this. Flip's mail next is leadership. You see, if you have got the penchant for settling goals, setting goals and settling goals. First, set a goal. We have to achieve this task. Walking a team through the steps required, and then achieving those goals in collaboration with each other. Flexibility यहाँ पर भी आएगी. Give them freedom to choose their path. You see, leadership applies to career. Whether you are a novice, or you are an experienced hand, or you are a seasoned entrepreneur, still leadership applies to career in all the cases, in all the professions. और सबसे बड़ी बात ये है, the training is a must for teaching community. If you are a teacher and you are not going for trainings, it will be difficult for you to stand, understand, and stand the force of new queries, new problems arising. जैसे जैसे system change हो रहे हैं, वैसे new problems will also be there. Entry level workers, they need more leadership skills, and that is for a number of reasons. It helps them to understand the decisions that managers and business leaders make, why they make, how do they come to the conclusion this definition or this uh, solution will be most appropriate to solve my problem, unless and until they have got leadership skills. Number of leadership styles are also there. Next one is those entry level employees can apply their leadership skills when they are promoted to middle management or equivalent. एक पीजीटी को वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो पीजीटी पहले बनता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसा कि मेरे केस में नहीं हुआ. I was PGT chemistry and immediately jumped to the leadership in Army Public School, that is vice principalship, and from there principal, and then remained principal for 18 years in different setups. So this is where the 21st century skill learners can apply their previously learned skills. जो professional skills हैं, leadership skills हैं, those you learn during your entrepreneurship, during your job performance at different levels, and then apply them when you become a leader yourself. And it is also where they get the real world experience. जब आप उनको एक flexibility देते हैं, adaptability देते हैं, give them the freedom to access the information, adapt the information, modify the information, modify their path to approach the goal, and then apply. Next is, as the lead individual department, they can learn the ins and outs of their specific career. As a HOD of science, I can learn
the different aspects of managing a science laboratory, not only chemistry, physics also, chemistry also, biology also, lower classes life science, more lower classes environmental science, everything comes up. And if the teachers teach this skill, leadership skill, or to say for example मैं स्टूडेंट्स के लीडरशिप की बात करता हूँ, I used to make them leader for the various tasks in within a class and give them a sort of appreciation. अब वो appreciation कोई reward नहीं होता था. In same class there will be a number of, अब I'll say the leaders. हम जनरली देखते हैं कि क्लास मॉनिटर हम रखते हैं, मॉनिटर द वन हु मॉनिटर्स द प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस. लेकिन आई टेल यू, इफ यू आस्क, गिविंग देम द ऑप्शन, द पेरेंट्स, व्हाट डू यू वांट टू योर चाइल्ड टू बिकम, क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे से? देयर विल बी टू थिंग्स ओनली विच दे नीड, विच दे रिक्वायर द स्कूल टू इम्ब्यू इन देम. सर, पहला, दे शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. अच्छा जी, ये तो हो जाएगा. एंड नंबर टू, कि सर इसको ऑफिसर बना दो कैसे? अब हम उनको क्लास में लिखते हैं मॉनिटर्स मॉनिटर्स मॉनिटर्स. व्हाई डोंट वी यूज द वर्ड ऑफिसर, क्लास ऑफिसर? उसके बाद कोई पानी पीने के लिए जाएगा, देयर विल बी वाटर ऑफिसर. कोई आदमी स्विचेस बंद करने के लिए, ऑन करने के लिए जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा विद इन द क्लास टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनवायरमेंट, ही विल बी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर, cleanliness officer, discipline officer, line officer, chalk and board officer, to collect the homework, homework officer. अब इनके जैसे पुलिसमैन और आर्मी वालों के चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ये एक बैच होता है, वैसा बैच आप बना लीजिए हर क्लास के लिए. लाइन ऑफिसर 6th डे, क्लीनलीनेस ऑफिसर 6th डे, चौक एंड बोर्ड ऑफिसर 6th डे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर 6th डे. 15 डेज के लिए इन्वेस्टिचर करिए और वो यहाँ पे टैग लगा दीजिए, योर सेल्फ, every 15 days, which means third Monday of every fortnight. They will go with a broad chest back to the home. Mama, देखो, class officer, water officer, electricity officer, doors and window officer, chalk and board officer, water officer. कितने सारे officers आपकी? Everybody is officer. And every 15 days, when you circulate these tags among your students, within 6 months, you will see a miracle happening. एक तो उनका mindset change होगा कि yes, I have to be an officer in my lifetime, anyway, anyhow. Mindset तो change करना ही है आपको. And that is the leader. But the leadership alone is not enough to get ahead. Initiative. अभी आप देखेंगे जब 6 महीने बाद ये ट्रेनिंग सबकी पूरी हो गई, then everybody will be responsible to put off switches when the class is vacant. Close the tap when the water is running without anybody drinking. देखिए क्या क्या मिरेकल होते हैं आपके स्कूल में. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. ये मैंने आपको बाकी पहले वालों में बता दिया है. Initiative means when you come forward, offer your knowledge, experience for solving a problem which is being put up by your colleague or by your leader, by your head of the department, by your head of the institution. क्या करेंगे? That is initiative. If you have got, come forward without a hitch. You may fail, you may not fail, you may succeed, you may learn. But same thing has to be done in leadership. When we come down to the students, learn and practice, learn and practice, learn and practice. मोहम्मद अली ने एक बार बोला था, I hate training, but then
I used to be trained every day because in my lifetime, the ultimate goal was to be a champion. चैंपियन बनने के लिए तो आई हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, आई हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस हार्डेस्ट ऑफ द स्किल्स. अभी मेरा अगस्त का इशू आपको मिलेगा. अगर आज कल में तैयार हो जाता है तो आपको ऑफर के साथ अगस्त का ही इशू भेजूंगा. उसमें आप देखिएगा. लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस, लर्न प्रैक्टिस एंड देन डिलीवर. डिलीवरी तो हम उसी चीज की करेंगे अनलेस एंड अनटिल वी आर ट्रेन इन अ पर्टिकुलर ट्रेड. हाउ डू वी ट्रेन अदर्स? इनिशिएटिव का मतलब ये भी होता है कि इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड आवर्स, इट गो बियॉन्ड वर्किंग आवर्स. कभी कभी मैंने देखा है, मैं एज ए प्रिंसिपल आई यूज टू आस्क देम टू स्टे बैक, माय टीचर्स, ऑल द स्कूल्स, 7 schools I headed, different type of schools, standalone schools, community schools, group schools, group of schools, Christian schools. Most of the teachers used to crib, अरे सर क्या करेंगे, खाली बैठना है. ये चीज, दिस इज योर प्रॉब्लम कि खाली बैठना है या अगले दिन की तैयारी करनी है या आज का पेंडिंग का वर्क जो है वो कंप्लीट कर दें. दिस इज योर हेडेक, बट यू हैव टू स्टे. कुछ टीचर्स अपने आप रुकते थे कि सर देयर आर 7 students who are not performing well in my class, I want to take their extra coaching, give them some proper hints so that come up they can come up to the average student. Once they progress, then they will take the initiative and they will learn themselves. So that is means working outside the working hours. अनकंफर्ट होगा, लेकिन आप एज अ पर्सनल ब्रांड, अरे गुलाटी मैम, वेरी नाइस मैम, सर ही एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली, और बड़ा पेन लेती हैं बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा क्लास भी लेती हैं. जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले मुझसे पूछती हैं, तो मेरे को तो पढ़ के जाना पड़ेगा. आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड. बट द रिवॉर्ड्स, अब ये जो मैंने टैग वाला बताया, यू टेल मी कि इसमें आपको प्लास्टिक का नहीं बनवाना किसी दुकान से. कार्डबोर्ड लीजिए, थिक कार्डबोर्ड, 4 mm का, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा. 40 रुपए मीटर की मार्किन लीजिए, छोटा सा पीस लीजिए, 3 इंचेस, उसके ऊपर उसको रैप करके और फेविकोल से चिपका दीजिए. पीछे की तरफ एक पिन और आगे की तरफ मार्कर से लिख दीजिए. कितना खर्चा आएगा? 2 रुपए भी नहीं आएगा एक बैच बनाने के लिए. बट दैट विल बी अ रिवार्ड. किसी पढ़ने वाले बच्चे के लिए गुड ग्रेड्स विल बी रिमार्क. किसी बिजनेस वाले के लिए एक नया वेंचर, बिजनेस वेंचर, दैट में बी द रिवार्ड. सेन एक्स्ट्रा 30 minutes मैंने बोला, वॉलेंटियरिंग मैंने बोला. Regardless, initiative is an attribute that earns reward. It is specifically or especially indicative of someone's character. He is very much helpful. Oh, Meera madam, very much helpful. She never says no. Flexibility और leadership qualities, ये डबल गो क्वालिटीज आपके अंदर होनी ही चाहिए. ये अपने आप ही आपके पास इनिशिएटिव और बाकी सारी स्किल्स आ जाएंगी. 4 C's आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए. P मीन्स प्रोडक्टिविटी. अभी मैंने आपको बता दिया, इनिशिएटिव विल गिव यू प्रोडक्टिविटी. The stability, the student's ability to complete the work in appropriate amount of time, that is ability, and that is productivity. To complete a task within the specified time, that is productivity. Productivity is also means creating something new. And a person who wants to rise from entry level to chief executive officer of a company
इट इज टू गेट मोर डन इन लेस टाइम। ये गुरु मंत्र है, ये आप अपने लिए भी देख लीजिए। दोज हु आर टीचर्स ओवर देयर एंड एस्पायरिंग टू बिकम वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और इवन अ ट्रेनर लाइक मी। मैं तो 62 का हो गया, 10 साल से ट्रेनिंग में हूँ। 53 की एज में मैंने ये सैलरी जॉब्स का सिस्टम छोड़ दिया। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। दूसरे की गुलामी क्या करनी है यार, अपना काम करो। फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे को कोई बिजनेस नहीं मिला, एंड नाउ आई एम डूइंग वेबिनार्स एवरी 6 डेज। अगर कोई वर्कशॉप मिल जाती है तो एक वेबिनार मेरा खत्म हो जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मोर डन इन लेस टाइम। पहले 3 महीने तो मेरे को एक भी वर्कशॉप वेबिनार कुछ नहीं मिला था। फर्स्ट 3 मंथ्स एवरीबडी वाज अनॉयड। तेरी सेविंग कब तक चलेंगी, कब तक बैठ के खाएगा। मगर मैंने एक चीज देखी है, हमारे हिंदी में एक कहावत है, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। मैं ये कहता हूं कि दोनों कानों को प्लग कर लो, सुनो ही मत। बिकॉज वॉट्स एवर गोज इन इट कम्स आउट। गुड गोज इन, go good out. Garbage in, garbage out. Negativity in, negativity out. Positivity in, positivity out. Motivation in, motivation out. This is Gigo philosophy. Go in and go out. Whatsoever you want to be. Next. Now, productivity means different strategies at every level. The student can discover different ways of doing a task, performing a task which they work best. किसी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, एक्सटेम्पोर अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर अच्छी है। इन फ्यूचर यू कैन ट्रेन देम टू बी अ क्रिएटिव राइटर, author, motivational speaker, because these are all experiences. Next is carry out the ideas, which means which will give them productivity, gives them the practical means to carry out the ideas through again flexibility, leadership and initiative। ये तीन चीजें तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज लास्ट वन, सोशल स्किल्स। नाउ सोशल स्किल्स में क्या होता है, बाकी जितनी भी स्किल्स हैं they will be effective only if you have got social skills, which means how to mix up with other people of your profession or of general category, which means business is done generally by connection। जैसे मेरे को यहाँ पर जहाँ पे 36 participants are already there, out of them none knows me personally, physically, फेस टू फेस हम लोग कभी नहीं मिले। But I am seeing over here, there are a number of participants who have been attending from the reputed schools like Bal Bharti. They are regularly attending my webinars. They are sharing these webinar recordings with other people. Fine, that is great. Because you are learning first and then you are passing your information to others. And that is connection. How do I know you? I don't know you, any one of you personally. कुछ के फेसेस मेरे को पता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे कीप वो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और भोलेनाथ की अपने डीपी में जो है वो फोटोग्राफ लगा लेते हैं। और मेरे को जब ऐड करना होता है पेड ग्रुप में, तो मेरे को पहले गौर से देखना होता है ये गणेश जी वाली फोटो है, फिर मेरे को नहीं होता तो नंबर नोट करता हूँ, देन आई ऐड गणेश जी वाली फोटो जो है उनको ऐड करना है। कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी
rarest of the rare cases में I have found nearly 5% people putting up their own photograph. मैंने तो अपना रख रखा है, या तो VES होगा गूगल पे या फिर मेरा अपना फोटोग्राफ है, so that you can identify that you are giving right person the payment as it is required. ग्रोसरी, मैं एक काम करता हूँ हमेशा, जब भी पेमेंट करता हूँ, इवन ग्रोसरी शॉप वाले को पेमेंट किया, बैक किया, जब डन आया तो डन लिखा उसमें, एंड देन वो जो क्लिक द पेमेंट का एक छोटा सा कॉलम आता है, उसमें है पेमेंट गॉन, उसको क्लिक करता हूँ, सबसे नीचे आता है शेयर, वो रिसीट में शेयर कर देता हूँ। 10 दिन बाद जाऊंगा, ग्रोसरी वाला बोलता है पंडित जी आपका वो उस दिन का 776 रुपए का बिल था। मैंने कहा भाई मैं हमेशा पेमेंट करता हूँ, पेटीएम निकाला, उसको उसी डेट का दिखा दिया, मैंने कहा सी है। मैंने कहा अगर अब आप अपना व्हाट्सएप चेक कर ले तो अच्छा रहेगा। दिस इज द वे दे गेट न्यू प्रैक्टिसेस। whenever you make payment, share your receipt with the person or the shopkeeper. नेटवर्किंग तो इसी को कहते हैं, that is social skill, connecting with other people whom you don't know. Next is these ways of communication, the ways we use social media, they have changed, and similarly the nature of human interaction. फेसबुक पे अभी 3-4 दिन पहले मेरे को एक रिक्वेस्ट आई कि सर आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा यस टेल मी, कि सर मैंने किसी से 20,000 रुपए लेने हैं और मैं, आप अपना गूगल पे नंबर दे दीजिए तो वो पेमेंट आपको कर देगा, 3 दिन बाद आप मेरे को कर देना। मैंने कहा भैया हाथ जुड़वाओ, मैंने कहा आई डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ चैरिटी। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सर क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होना चाहिए। इंटरेक्शन करिए, बट डोंट लेट एनीबडी एल्स यूज यू। क्योंकि आप हर, मीरा मैडम तो हर जगह इनिशिएटिव लेती है, फ्लेक्सिबल लेती है, ऑलवेज हेल्पफुल, उनको जरा टैकल करें इस तरीके से। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द पीपल whom you don't trust or who don't trust you. There are a number of people who will be coming in your life, so ये interaction you have to be very much careful. Some are more socially adept than others, and some are far behind their peers, and some lucky few may be far ahead also. When socializing comes, it comes naturally. ये बहुत मिलनसार आदमी है, because he gathers every information about everybody and then interact with them. सर मेरा नाम अजय शर्मा है, आप कहाँ से, क्या नाम है, क्या करते हैं? ओह अच्छा, अच्छा अच्छा मुरादाबाद, ओ मैं गया था सर बहुत साल पहले, वहां पे एक स्कूल है सिल्वर स्टोन करके, वहां पे गया था। फिर वो पूछेंगे इंक्वायरी, आप क्या करते हैं? तो इसी तरीके से एक दूसरे के बारे में हम लोग खुलते चले जाते हैं। बट आज के स्टूडेंट्स को सोशल स्किल्स के बारे में क्रैश कोर्स चाहिए, और वो क्रैश कोर्स क्या है? एटिकेट्स, मैनरिज्म, पोलाइटनेस, स्मॉल टॉक, ये सब इसके बारे में आप लोगों को एक पीरियड, एक हफ्ते में, देयर आर 48 periods, just one period on one particular thing and train them. देखिए हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगता है, because you have to keep on practicing the same thing over and over, over and over, over and over, again and again, again and again. आज की डेट में आपको कोई सवेरे उठने के बाद ब्रश करने के लिए नहीं बोलता होगा, मगर आप अपने छोटे बच्चों को डेली बोलते होंगे चलो बेटा ब्रश करो, चलो बेटा नहाने के लिए तैयारी कर लो। Why? Because we are training them. Unknowingly we are training them. So by genes each one of us is training. Just only मेरा ट्रेनिंग का एरिया टीचर्स की ट्रेनिंग है, एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स थ्रू
various resources and get them fullest to their capability. जहां तक वो जा सकते हैं, go, reach beyond the sky. You will reach beyond the sky unless or until first you reach the sky. आप स्काई तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, आसमान तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज इट इज अ विजनरी इल्यूजन. आपको दिखता है आसमान वहां है, मगर वहां नहीं है. सो क्रैश कोर्स सोशल स्किल्स के बारे में अपने बच्चों को दीजिए, एंड देन इसके बारे में एटिकेट्स, मैनर्स, वैल्यूज, वर्च्यूज. हमारे दुनिया में, हमारे देश में नमस्कार करने का एक प्रथा है. अभी देखता हूँ व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग. क्यों भाई, राम राम बोलने में शर्म आती है? अस्सलाम वालेकुम बोल दिया तो क्या मुश्किल पड़ जाएगी? अपनी परंपराएं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में भी बच्चों को संस्कार देने हैं. And DAV is far ahead of most of the general schools, public schools. एक एजुकेशनल सेटिंग में इन वैल्यूज, वर्च्यूज, एटिकेट्स, मैनरिज्म, सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी आपको. अभी मेरा एक वेबिनार आ रहा है 25th and 26th, टेमिंग द टेम्पर. ये टेम्पर जो लूज करते हैं छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी कर देते हैं, बुजुर्ग भी कर देते हैं. इसको टेमिंग कैसे करनी है? देखिए, हमारा प्रोफेशन कहता है कि वी हैव टू बी वेरी हम्बल, very polite in all the aspects of life, with anybody, everybody, and see yourself going far and far and far above. I am saying, when I give them, anybody, the blessings, keep moving ahead and growing upwards with lots of smiles. Happy birthday. So it is another skill to be added to your life. Now this was the last. ये मेरा पहले का है, देखिए जनवरी का 23 का, ये जनवरी में भी किया था. So over here I will stop sharing. You can open up now your videos and ask any of the questions if you have got any doubt in your mind or anything which comes to you. Please open up, unmute yourself, and let me know about your doubts, and we can go further for further question answer, because we don't have that much time. We are nearly 40 to 45 minutes. 2-3 मिनट का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो शुरू में किया कर लिया, जो कुछ अब करेंगे. Anybody who is interested to ask any doubts? Anything? Good evening, sir. This is Richa Mahajan. Yes, Richa ji, good evening. Sir, there is no doubt you explained everything very well. And one idea I liked very much, that instead of giving monitor badge, we should call the students officer. Yes. That will give them motivation. That is a very wonderful idea, sir. Thank you so much. लाइफ टाइम मैडम, लाइफ टाइम माइंडसेट बन जाएगा कि मैं ऑफिसर हूं और मुझे ऑफिसर ही बनना है. You Yes, just sir. see the miracle happening within your Yes. school setup, their family setup, and their life setup. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Richa ji. Thank you, Pooja ji. Thank you very much. So if nobody has got any doubt or any ideas or anything to speak up, then we will end up this session today's. And if it is converted today itself, this is, thank you very much, ma'am. Thank you, Sunil ji. Meena ji, thank you very much. Farheen ji, thank you. Pooja Puri Bhandari ji, thank you very much. Madam, this is all experience that gives me this particular skill to explain to you each and everything. But when you go through next time this recording, next time again, अपने किसी के साथ शेयर करेंगे तो पहले तो खुद की उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए. Excuse me, sir. Good Yes. evening, sir. सुन जी बोलिए.
Sir, I'm Kusum from St. Joseph's Convent, Secondary, Pathankot. Yeah. And sir, you explained this lesson very well. We all got many new concepts. But sir, one query I'm having that are these hours are going to be counted in our CPD? CPB. CBP. Yes, Yes. sir. Yes, Actually, yes. now Madam, it is one the ma- certificate for one module, 1 day, 1 hour. It is equivalent to that. no, it is okay, sir. You told earlier also, but my question is this: these will be added in our 50 hours training program or not? Provided you give this proof to your principal. Okay, and sir, what about our OSs? Actually, what we are doing from our CBSE training portal, that automatically added in that OSs in our ID. But I don't know when we that. will give to our principal, then only it will be added. Yes. Are you Okay. getting certificate for that? Yes, sir. I got that previous one also, and CBP ka. CBP is capacity building program from Center of Excellence, COE of CBSE. we are getting, sir. We are getting. We are getting, then you certainly you, sir. automatically hota hai, but submit the photocopy of the certificate to the principal also to be put up Okay, in sir. your personal file. आपकी personal file में वो रहेगा तो हाँ it जी. will be a record forever. Okay, sir. Yeah. Thanks. Thank Thanks. you so My much, pleasure, sir. ma'am. This is My Vandana Thakur from St. Joseph. Thank you so much for a wonderful session. I couldn't see anybody over here speaking. Thank you so much, sir. This is Oh, Vandana Vandana Thakur ji, from thank you. St. Thank you Joseph, very Pathankot. much. Such a wonderful session, and one thing I liked is instead of monitor, you can have the class officer really to instill good values in students from the beginning itself. Yes, Thank you yes, so yes. much. You see, And second basically, thing I tell you which one I thing, liked, Vandana ji, Kusum ji, कि you right, are sir? asking whether these will be added. किसी ने मेरे No, से sir, I'm पूछे not थे. asking regarding No, that. no, no, no. Vanna is Somebody not asked. asking. तो Yeah, जो भी ट्रेनिंग आप लेते हैं अगर वो सर्टिफिकेशन के साथ है then only you take. correct. Otherwise Right, there sir, is right. no fun of paying. आपकी आवाज Correct. वंदना जी थोड़ा कम आ रही है. मोबाइल को पास कर लीजिए या माइक्रोफोन पास कर लीजिए. Thank you so much, sir. Thank you बोलिए. for the wonderful session. Thank you very Right, much, sir. ma'am. I liked your session very much, especially the cultural values which you told us to inculcate in the students. Instead of good morning, we can tell them to say Ram Ram or whatever the cultural things we have. Right, sir? Yeah. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for your wonderful comments. Thank you. That gives me also a motivation to perform a little bit better next time. Right, sir. Right, sir. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, then we end the session. This is exactly 7:30 p.m. We started at 6:35, 55 minutes. Thank you very much. Have a good dinner, wonderful dinner, and a nice sleep.